Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, As-salatu Wassalamu ala Sayyidil Anbiya'i wal Mursaleen, Amma ba'd, wa ya'udhu billahi minash shaitanir rajeem, Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum, Nazireen. Uh, Last week, from the platform of Imam Ahmed Khan Translation Movement, we have recorded a long lecture on the issue of earth motion, Copernican astronomy, and Shaykh Ahmed Khan, where we have elaborated and included the discussions of Islamic astronomy, Greek astronomy, Copernican astronomy, and the critical importance of the works, arguments, and the books of Shaykh Ahmed Khan. But we as a team felt that that lecture was long enough, like 1 hour and 50 minutes. So, because we have dealt with different scholars and these arguments, and we have provided critique, which are the scholars are very modern. So what we have decided that we will divide our lecture issue by issue. We will take one scholar and we will refute their criticism of Shaykh Ahmed Khan on the issue of earth motion. So today, and this clip and this lecture will be very short, like around 10 minutes. So you can all watch and you can give this time of 10 minutes. So today, uh, we are going to deal with the criticism of engineer Mirza Ali, who has recorded a lecture before like 2 or 3 months on the issue of earth motion, where in that lecture he has lied so many things and misrepresented so many things. And why we are interested to deal with this person is that he is very arrogant first. He is very overconfident and he has no uh, regard about the other, about the way of argument. So today we will see two arguments of his and then we will refute one by one. So first we will listen what he says about the first issue, where he is saying that Sheikh Ahmed Khan uh, has not calculated the volume of sun. He just mentioned it that modern astronomy has said so. So I'll share with you what he's saying. So I'm sharing with you this one where he says, so I will start. So you listen this carefully. 160 गुना बड़ा है, 160 टाइम। 160 जमीनें मिले तो एक सूरज बनता है। जबकि आज हमारे बच्चे को भी ये बात पता है कि सूरज जमीन से 160 गुना नहीं है, ना 1060 गुना, ना 1,60,000 गुना, बल्कि 13 लाख गुना बड़ा। अब उनके पुराने बुजुर्गों को गलती लगी, इसलिए कि उनके पास साइंस का इल्म कम था। ये कोई दीनी मसला तो उन्होंने बयान नहीं किया। और अगर आपको हमारे बच्चों से चिढ़ हो जिनके पास दीन का इल्म भी है और दुनियावी इंफॉर्मेशन भी, तो हम आपको आला हजरत की मिसाल देते हैं। ये जिस किताब को आपने उठा के एक हंगामा खड़ा कर दिया पूरी दुनिया के अंदर, जमीन साकिन है, उस किताब के अंदर खुद आला हजरत ने लिखा है कि जो जमीन और सूरज का जो रेशो प्रोपोर्शन है, सूरज जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। आला हजरत कह रहे हैं अल-मुतवफ़ा 1340 हिजरी कि ये 13 लाख गुना बड़ा है, जबकि उनसे 800 साल पहले इमाम गजाली कह रहे हैं 160 गुना है। आप मुझे बताएं दोनों में से किस बुजुर्गी को आपने लेके चलना है? अगर आला हजरत की बुजुर्गी बचाते हैं तो इमाम गजाली की बुजुर्गी फारिग हो जाएगी, और अगर इमाम गजाली की बचाते हैं तो आला हजरत की। हालांकि दोनों को अगर हम साइंटिफिकली देखें तो आला हजरत की बात दुरुस्त है, इमाम गजाली की बात गलत है। लेकिन इससे रिजल्ट ये भी निकला कि पुराने बुजुर्गों को कई मामलात के अंदर साइंटिफिक फैक्ट्स में गलतियां लगी हैं, और ये आला हजरत ने खुद नहीं कैलकुलेट किया 13 लाख गुना। उन्होंने लिखा है कि जो फलकियात के माहिरीन है, जो इस फील्ड के लोग हैं, उन्होंने हमें ये बात बताई है, और उन्होंने कहा मैं इसके साथ एग्री करता हूं। बल्कि उन्होंने कहा कि मैं तो कहता हूं ये तकरीबन 14 लाख गुना बड़ा है, ये भी लिखा है। और हम ये इंशाल्लाह जेपीजी ऐड करेंगे ताकि किसी को इस हवाले से आमदा इतराज उठाने की जुर्रत न रहे। So now you have listened what he's saying, that is comparing the calculation of Imam al-Ghazali and Shaykh Ahmed Khan. We are not supposed to deal with the
issue of Imam al-Ghazali right now, because we are concentrated on Shaykh Ahmed Khan. Now he says that this guy, engineer Mirza Ali, he says that Shaykh Ahmed Khan in his book, Fawz-e Mubin, he did not calculate the volume of sun. He just mentioned it by referring to the calculation of modern astronomy. Now I will show you from the Fawz-e Mubin itself that he has calculated the volume of sun. And he has mentioned his book name as well, from where he had already calculated those things. So this is what this is the English translation of Fawz-e Mubin, and this is at page number. This is at page number 121. So, as page 121, he says that that in magazine Al-Haniyal Namir fi Mai Al-Mustadir, we have quoted it to be 8269.0. So he's saying all the calculation here, and then he has found like it is 109.509 times of the diameter of the earth, and the bulk of the sun is equal to the volume of 13,13,100 earth. So he has calculated all the data available of the modern astronomy, and then he calculated the volume of the sun, and he referred his book with this name, where he already calculated all those things: the circumference of the sun, the volume of the sun, and the earth itself. So now Mirza engineer Ali, so he is saying that he did not calculate the volume of the sun, but Shaykh Ahmed Khan in his Fawz-e Mubin, he has done so. He calculated the volume of the sun. Now, the second point which engineer Mirza Ali lied to the people is that Shaykh al-Bairuni, who was the last polymath of the Islamic world, not last, one of the first polymath of the Islamic world, he has said and he has written and he has proposed that Earth is moving. So now first listen what he is saying. Then we will show what actually Shaykh al-Bairuni says. So it is from 101, I guess. Yeah. कर रही एटमॉस्फेयर जो जमीन के ऊपर है, जिसमें से पहले 50 के उड़ रहा होता है ना, तो वो जो जमीन की अपनी रफ्तार है ना, उसके एतबार से वो ऑलरेडी उस फिजा में भी उस स्पीड से चल रहा होता है, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि एयर की रेजिस्टेंस क्या है। अगर हवा उस तरफ चल रही होगी तो फिर ज़ाहिर नहीं भी होगा, हवाओं का रुख भी है। जिस तरह आप इस्लामाबाद से कराची जाए ना, तो आपको अगर 2 घंटे लगते हैं ना, तो कराची से इस्लामाबाद के 1.25 घंटे लगते हैं। वो डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि समुद्र से हवाएं उड़ के इस तरफ आ रही होती है, तो इस वजह से वो टाइम का फर्क आता है। वो अगर एयर रेजिस्टेंस खत्म हो जाए फिर तो प्रॉब्लम। अच्छा, अब इसको सपोर्टिव एक और दूसरी बात है, कहते हैं ये जहाज जो नीचे जमीन गायब क्यों नहीं हो जाती, तो इनको ये बताएं कि सैटेलाइट जो है ना, जब छोड़े जाते हैं, आपको पता है सैटेलाइट जिस मुल्क के ऊपर छोड़ा जाए ना, अगर आप जहाज को ले जाए ना खला के अंदर, फिर वाकई ऐसे होगा कि एक जगह खड़ा होगा ना, तो थोड़ी देर बाद अमेरिका पहुंच जाएगा जहाज, क्योंकि खला जो है वो इसके साथ मूव नहीं कर रही, रोटेट नहीं कर रही। और यही वजह है कि जब सैटेलाइट छोड़े जाते हैं ना खला के अंदर, उनको एंगुलर स्पीड जमीन की देनी पड़ती है, वरना अगर पाकिस्तान ने सैटेलाइट छोड़ा है ना, थोड़ी देर बाद वो चाइना पहुंच जाएगा, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा, फिर अमेरिका पहुंच जाएगा, पाकिस्तान लबदा रहेगा अपना सैटेलाइट। वो क्या करते हैं, जब सैटेलाइट छोड़ते हैं ना, तो जिस रफ्तार से जमीन घूम रही है ना, वही स्पीड उस सैटेलाइट को भी देते हैं, तभी वो साथ साथ उस तरीके से मूव करता रहता है। सैटेलाइट स्पीड में छोड़ा जाता है, लेकिन एटमॉस्फेयर के अंदर जो चूंकि पूरा एटमॉस्फेयर मूव कर रहे हैं, वहां आप ये फील नहीं कर सकते। तो ये वो जो शैतान अगर आपको वसवसा दिलाए कि जब हवाई जहाज ऊपर जाता है तो वो खुद ब खुद अमेरिका क्यों नहीं पहुंच जाता, तो आप थोड़ी सी साइंस सीख लें, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ लें, जो उसने कॉमन ऑब्जर्वेशन की थी। अच्छा, अब आ जाए मेरे भाई इस नजरिए की तरफ
ये दो नजरियात हमेशा से इंसानियत में रहे हैं और कबल मसीह हैं, नबी इस्लाम से भी पहले के हैं। एक जियो सेंटरिज्म है कि जमीन कायनात का महवर है, हर नहीं कर रही, रोटेट नहीं कर रही। और यही वजह है कि जब सैटेलाइट छोड़े जाते हैं ना, उससे थोड़ी देर बाद पाकिस्तान खुद ब खुद पहुंच जाना। कल रही हो तो आप समझते हैं कि अच्छा जमीन को गोल भी लिखा है और जमीन का सरकमफ्रेंस पूरा मालूम किया है उन्होंने सोलर सिस्टम के साथ, लेकिन सोलर सिस्टम के जो सैटेलाइट है वो इसके गिर्द घूम रहे हैं। लिहाजा ये कहना कि ये 1615 के अंदर आके गलीलियो ने ये जो है वो मुसीबत इंसानियत को डाली, उससे पहले किसी का कीदा नहीं था, हमेशा से था। सर गलीलियो तो है 1615 में उसने टाइड्स के ऊपर अपनी किताब लिखी है। गलीलियो से भी 600 साल पहले अल बैरूनी जो मुस्लिम साइंटिस्ट था 1973 ईस्वी में पैदा हुए और 1050 ईस्वी में फौत हुए, 8 से 1000 साल पहले। उनकी किताबें दुनिया में मौजूद हैं जिसमें उन्होंने जमीन को गोल भी लिखा है और जमीन का सरकमफ्रेंस पूरा मालूम किया है उन्होंने, जो सबसे एक्यूरेट सरकमफ्रेंस है। उतने लिमिटेड सोर्सेज के साथ सिर्फ 2% का एरर है आज के साथ। उस बंदे ने उस वक्त कैलकुलेट किया सिंपल मैथमेटिक्स के जरिए। तो वो अलबरूनी भी उसमें लिखता है कि जमीन जो है वो मूव करती है। तो ये गलीलियो के खाते में डाल दिया हुआ इन लोगों ने। ये तो मुस्लिम साइंटिस्ट का भी नजरिया था। गलीलियो को तो now as you have heard, we just misplaced, we just started from a little bit before. So what he's saying that Shaykh al-Bayruni has said that he has written that the earth is moving, and he has calculated the circumference of the earth and these things. Okay, so now we will see what Shaykh al-Bayruni really has written about the issue of earth motion and what he has proposed. Now we would like to share with you the book of al-Bayruni, which he has written when he visited India, and it is called Al-Bayruni's India, and we are referring to the page number 277, last paragraph. He says that besides, the rotation of the earth does in no way impair the value of astronomy, as all appearance of an astronomic character can quite as well be explained according to this theory as to the other. There are, however, other reasons which make it impossible. This question is most difficult to solve. The most prominent of both modern and ancient astronomers have deeply studied the question of the moving of the earth and tried to refute it. We too have composed a book on the subject called Miftah Ilmul Haya, Key of Astronomy, in which we think we have surpassed our predecessors, if not in the words, at all events in the matter. So you see, Shaykh al-Bayruni is saying that he has written Miftah Ilmul Haya, a complete book refuting the earth motion, because he has seen an astrolabe made by Ashiji where he put earth on the center of the solar system. So there he refuted, and then he came up with the whole book, writing down the arguments of ancient and the modern astronomers like Ibn al-Haytham and all others, and refuted the motion of earth. So this is what Shaykh Ahmed Khan has calculated the volume of the sun, and Shaykh al-Bayruni has written the whole book refuting the earth motion. But Mirza, Engineer Mirza Ali, he is saying to the people that these both things has not been done. He is lying to the people. He is lying to the people. He does not understand the science, neither astronomy, neither philosophy of science, neither the methodology of science. Because right now we are only dealing with two critique of Mirza Engineer. So we will stop this video, this lecture here, and on a later day we will refute again two of his arguments from the same lecture, one by one, so that his followers, those who are following him, and he himself
can learn a little bit science, what's going on. Okay, so keep in touch with Imam Mirza Khan Translation Movement. Share this video, like this video, and let them know that the real knowledge of Shaykh Mirza Khan is still coming from his book on astronomy and all others. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.